Hello Tigers, welcome to Sage Doc. In my last video, I told you that from now on, my videos would be related to our profession. We'll be talking on topics straight away. So let's get to business straight away. So after completing your graduations or your BBA or your MBA, once you are through with your studies and prepared to take on to this profession, we need to do some preparation. So the first step would be preparing for interview. Just giving an interview is not enough. You need to prepare yourself thoroughly before going to an interview to make an impact on your interviewers, because that's very important. If you talk of me, I don't have much experience of giving interviews since I worked for one company for 27 years. मेरा total career 34 years का है, उसमें से 27 years I worked for just one company. I've given just 2-3 interviews, and but for around 23-24 years I have been part of recruitment team. I have been recruiting sales team, whether it is walk-in interview or going down to campus for recruitments. So I've been a part of recruitment team for around 24 long years. So based on that experience, what I expected from people who came down for an interview is what I'm going to share with you all. I'm not consulting any book. That would be only what I expected. I will be sharing it with you so that you prepare yourself for that. As I mentioned, I worked for 27 years for just one company. So I also said in my first video, if those who have watched my first video, I started my career as a sales trainee. I reached to a level of zonal sales manager. I did well, but I told you that I could have done better had I not made some mistakes, and I don't want any one of you to make those mistakes. So I'll be also sharing my mistakes, not to be repeated by you. So I did my post graduation in English literature. उसके बाद मैं went down and taught for around 1 year. Then I joined the pharmaceutical industry. I didn't find my career there because I didn't have that science background. Then I went down to sales and worked for around 27 years in one company. Then I switched over and worked for 4 years for another company. So the first two mistakes I committed was right here. First, I didn't go for a professional course. There were no sync between my qualification and this profession I entered to. Though I worked very hard, I had to work very hard because I didn't have that degree with me. And the process, at times I felt I was better than the people I was reporting to. But that's not a complaint. That's a regret. If I had that degree, which they had, I could have reached there earlier. So, though I reached to the position of a zonal sales manager, but I had to fight a lot. I had to work a lot, harder than what other people did. I had to upgrade myself regularly, whether it be Excel, computers, whatever it is. I had to work very hard to reach there. So, don't commit this first mistake what I did. Your education should be related to your profession you are choosing to. Second mistake what I did was I stayed in a company for 27 long years. So I don't say it was right or wrong. I had my own problems switching over. But I loved one statement from a very genuine person that, and you remember it, love your work, never love your company, because you never know when your company stops loving you. So keep upgrading yourself,
keep sharpening your skills and move ahead. Yes, it's good if you get escalated within your company faster enough. That's according to your vision. But if not, take a call. So let's come to the topic. I'll tell you how to prepare yourself for interview. So I'll be taking it in three parts. Hmm. First, I would be addressing people who are freshers, people who have after doing their graduations are going for sales profession. Their interview preparation would be different than for people who want to switch over, already are in sales and want to switch over for their betterment. Their preparation would be different. And then people who are looking to grow to escalate themselves to managerial cadre. So today I'll be taking on for freshers. This video would be for freshers. So the first step when you get into any profession is to get your CV prepared, right? This is the first step you do when you go for any interview. Your CV should be now your CV should be a very crisp CD, the CV, crisp, sharp and an honest CV. अब मैं क्रिस्प क्यों बोल रहा हूँ उसको क्रिस्प इसलिए कि बिकॉज आज की तारीख में यू हैव many sites, there are many people who guide you to prepare a good CV. Fine, कोई भी चीज़ अगर है आपके पास में अवेलेबल, कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है, यू यूटिलाइज इट. बट कैसे इज इम्पॉर्टेंट. You don't need to copy each and every statement from there. I've seen people making 2-3 pages CV. Not required. Make a crisp CV. एक छोटा CV जो आपके बारे में सब बताता हो, है ना, राइट. शार्प CV. शार्प कैसे, वो क्लियर होना चाहिए जो भी है आपका, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी हॉबीज, एक शार्प होना चाहिए. जो भी आप उसमें डालते हैं वो उसमें क्लियरली उस सीवी पे दिखना चाहिए. छोटा सा सीवी शार्प उसमें नजर आना चाहिए कि क्या है आप. सबसे उसके बाद मैंने बोला इट शुड बी एन ऑनेस्ट वन. क्यों ऑनेस्ट? बिकॉज अगर आप सच्चाई लिखेंगे, अगर आप खुद सीवी बनाएंगे तो आप सब चीज़ सच लिखेंगे. उसके अंदर हर चीज़ उस पर लिखी होगी, उसके बारे में अगर आप सच लिखेंगे so you will be always prepared to answer anything from that CV. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मैं जब इंटरव्यू के लिए गया पहली बार एक कंपनी में, मैंने जब फार्मा से स्विच ओवर किया, मैं इंटरव्यू के लिए गया. आई वेंट डाउन. आई वाज ऑलवेज प्राउड ऑफ, आई टोल्ड यू आई बीन अ स्पोर्ट्समैन एंड क्रिकेट खेला है अच्छे लेवल पे. सो बहुत प्राउड था. तो वो सर्टिफिकेट कैरी करना, वो सबसे शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो मेरे सीवी में वो चीज़ मेंशन थी. मैंने वो सर्टिफिकेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में कैरी किए थे, लेके गया था साथ में. मैं जब इंटरव्यू के लिए बैठा तो इंटरव्यूअर को मैंने अपना वो सीवी और डॉक्यूमेंट्स दिए. तो he had a look at that CV and then he saw my certificates. और बड़ा रैंडम से उन्होंने बोला, अरे यार ये क्यों लेके आया यार, मतलब मैं हम क्या करेंगे क्रिकेट के सर्टिफिकेट्स का, क्या हो गया, तू कैप्टन था या तू कलर होल्डर है, तो मतलब व्हाट इज वी गॉट टू डू विद इट. अब मैं प्रिपेयर्ड नहीं था फॉर दैट आंसर, वाज नॉट प्रिपेयर्ड. बट सडनली दिमाग में आया, मैंने कहा यार जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज आई वोंट लुक लाइक आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस. सो मैंने उनको बोला, मैं सर हर वो चीज़ जो एक स्पोर्ट्समैन कैरी करता है सेल्स के लोगों के लिए ज़रूरत है. उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा स्पोर्ट्समैन को बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है. डिसिप्लिन अबाउट हिज टाइमिंग, डिसिप्लिन अबाउट हिज डाइट, डिसिप्लिन अबाउट हिज फिजिक, डिसिप्लिन अबाउट हिज ड्रेसिंग. वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं. उसको किट पहनना पड़ता है प्रॉपर. खेलने जाने से पहले आप रैंडमली नहीं जा सकते. देन यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू मेंटेन योरसेल्फ. ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने मैच खेल लिया. नहीं, मैच खेलने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, आपको रनिंग करनी पड़ती है, आपको जॉगिंग करनी पड़ती है, आपको वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है. उसके बाद में एक इंस्टिंक्ट होती है, एक किलिंग इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं. हम एक क्रिकेटर, वी डोंट लीव अ मैच टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड. एक स्पोर्ट्समैन लास्ट मोमेंट तक गेम को नहीं छोड़ता है. तो मैंने कैसे, ये तीनों जो चीज़ें हैं, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड किलिंग इंस्टिंक्ट, ये सेल्स में ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है. ये आंसर आया. ही वॉज वेरी हैप्पी कि दैट मैं जस्टिफाई कर पाया. मैंने पहली बार सुना कि कोई आदमी अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट को जस्टिफाई कर गया. सो आई कुड डू इट जस्ट बिकॉज वो जो मैंने लिखा था वो सच था, है ना. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके सीवी को बहुत ऑनेस्ट सीवी होना चाहिए.
जो भी आप उसमें लिखते हैं उसका मतलब होना चाहिए, यू हैव टू मीन दैट। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपने अपने मैंने देखा है लोग हॉबी में लिखते हैं नॉर्मली, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। नो, अगर आपने लिख दिया और सडनली आपने किसी ने आपसे पूछ लिया कि ओके फाइन, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, कि हाँ सर, तो बताइए आपका फेवरेट सिंगर कौन है? यू डोंट नो, से इफ एट ऑल यू नो, यू नेम समवन एंड से चलो इनके आपके फेवरेट तीन चार गाने बताओ। नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। फर्क तब पड़ता है उस चीज का, एक इंटरव्यू को लगता है कि ये बंदा जो उसने लिखा है ही डजंट मीन दैट। तो वो जो पहला आपका इंप्रेशन है कि आपने उसमें सच नहीं लिखा है, वो उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। इट शुड नॉट हैपन, कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपके सीवी को क्रिस्प, शार्प और ऑनेस्ट होना चाहिए। फाइन, इस वीडियो को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। आज हमने सीवी कैसे प्रिपेयर करना है वो पार्ट लिया है। अगला जो वीडियो होगा, माय नेक्स्ट वीडियो वुड बी हाउ वुड यू प्रिपेयर योरसेल्फ अबाउट दैट कंपनी जिसका आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग, माय नेक्स्ट वीडियो would be uploaded very soon. Thank you.